years after the devastating earthquake in Bhuj killed nearly 13,000 people, a memorial to pay tribute to the victims has been erected. This memorial is built in a massive space which serves a dual purpose. It also functions as the first of its kind earthquake museum in India. We are here to find out how Smritivan engages with the local community to create awareness towards natural disaster and to find out how well prepared people of Bhuj are for an earthquake. Bhuj is the last big town on Gujarat's western frontier. Barring a few odd constructions, Bhuj has no commercial, administrative or residential spaces higher than 2 stories or 11 meters. Now the city has a shiny 50-meter imposing structure, the Bhuj Earthquake Memorial, which Prime Minister Narendra Modi inaugurated on 28 August 2022. The light brown memorial, zigzagging along several wide funnel-shaped canopies, sits on top of Bhujio Dungar hill, after which Bhuj is named. This structure is visible from a distance. There are 7 galleries inside Smritivan where chronicles of devastation and suffering coexist with those of resilience and collective remembrance. But this space isn't just meant to commemorate victims and educate future generations about preparedness measures. The Gujarat government has entrusted it with a bigger responsibility, pushing tourism in Bhuj. It wants the museum to become a cultural hotspot for Bhuj residents and tourists who flock to the run of Kutch. Bhuj resident and artist Jigar Soni is immensely proud of the advanced museum in his hometown. आप भुज के रहने वाले हैं, यहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं, जी। तो आपके म्यूजियम का आने के बाद भुज में कैसे इफेक्ट किया, यहाँ के लोग इसको कैसे अप्रोच करते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर? जी, ये जो म्यूज़ियम बना है स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूज़ियम, वो जो लोग जिन्होंने जान गंवाई है यहाँ पे, तो उनकी स्मृति में बना है। तो ये मेरे ख्याल से एशिया का लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, मेमोरियल है विस्तार की दृष्टि से। तो यहाँ के लोग जो है और बाहर के लोग अर्थक्वेक से कैसे निकले और कैसे आगे बढ़े, तो उसकी पहचान देता है। और ख़ास करके जो जानकारी यहाँ पे बताई है, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, तो वो मेरे ख्याल से एक अद्यतन म्यूज़ियम यहाँ पे बना है। आप जब आपने खुद भी भुज अर्थक्वेक सफ़र किया है, हाँ, उसके बाद से ये सिटी कैसे ओवरकम की है, उसको 20 साल बाद उसका क्या इम्पैक्ट रहा है लोगों के ऊपर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 15 सालों से देखें तो, क्योंकि वैसे क्या है कि लोग अवेयर तो हुए ही है कि हमें कैसे चलना है अब और कैसे यूज़ टू होना है। आज भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आफ्टर शॉक्स नहीं आ रहे हैं, तो वो 4 या 5 रिक्टर स्केल के आ रहे हैं और ये अर्थक्वेक जोन है इधर, तो जोन 5 में आता है। तो लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है इसी सिचुएशन में, और कच्छ के लोग जिस तरह से सब कुछ भुला के आगे बढ़े हैं, वो सबको सीखने लायक है। Museum Director Manoj Pandey, appointed by Delhi-based Sony Management, oversees the working of the museum. The company is one of the 7 private agencies tasked with running and administering the museum. सर, आप ये म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप एकदम पहले से इनॉग्रेशन के टाइम से हैं, तो तब से लेके अब तक इसकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए। 26 जनवरी 2001 को जब यहाँ भूकंप आया था, तो मोदी जी का एक बहुत बड़ा ये था कि यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे लोग इस आने वाली दैवीय घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इससे उनको जानकारी और सीख मिले। तो उन्होंने सोचा कि ये मतलब यहाँ एक म्यूज़ियम ऐसा डेवलपमेंट किया जाए। तो 2003 में
यहाँ के सारे कार्यक्रम चालू हो गए, समितियाँ बनाई गई, मीटिंग बैठाए गए, कई समिति उसमें बनी। तो कुछ समितियाँ ऐसी थी, कुछ गोष्ठी ऐसी थी कि जो लोग जाने लगे कि मतलब उनको बाहर जाके एक्सपीरियंस करना था कि किस तरीके से बनाया जाए, ये म्यूज़ियम किस तरीके से होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मिल करके जब इसका डिज़ाइन और मॉडल तैयार किया गया, तो फिर जब ये हायर अथॉरिटीज़ ने इसको पास किया कि इस तरीके से म्यूज़ियम होना चाहिए, तो उसी हिसाब से फिर काम चालू हुआ। यहाँ पे कई संगठनाएं आई जिनके माध्यम से ये सारे कार्यक्रम चालू किए गए कि जैसे वास्तुशिल्प जो है बी आर दोषी जी जो थे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस पूरे म्यूज़ियम का डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम 2015 से चालू हो गया। 2015 से लेकर 28 अगस्त 2022 को म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से किया गया। सर, इस म्यूज़ियम का थोड़ा पर्पस बता दें। इस म्यूज़ियम का पर्पज़ ये है कि जो लोग 2001 के भूकंप में जो लोग मारे गए, उनकी संवेदनाओं से ये जुड़ा हुआ है, उनको समर्पित है। 2000 की भूकंप में जो लोग अपनी जान माल की गंवाए हैं, उनको ये समर्पित किया गया है। इसी के लिए यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया कि लोग आएँ, यहाँ पे देखें कि उस समय जब भूकंप आया था तो किस तरीके से यहाँ की आर्थिक व्यवस्था और यहाँ की जो आप समझिए कि हॉस्पिटल्स वगैरह सारे टूट गए थे, तो डॉक्टर्स जो थे उन लोगों को किस तरीके से इलाज करना, लोगों को खाना पीना, रहने का, कपड़े का, उस समय तो ठंडी का मौसम था, तो कैसे लोगों ने जीवन यापन किया, उन समय कितनी कठिन परिस्थिति थी। और आप समझिए कि हर जगह घर मकान सब गिर पड़े हैं और खाने की सुविधा नहीं है। तो लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे आके मदद की है, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ के लोगों को सहारा दिया, वो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, लोग उसको कैसे जानेंगे कि कुछ समय के बाद कि कैसी स्थिति परिस्थिति थी, उसके लिए ये म्यूज़ियम बनाया है, जिसमें आप समझिए कि पृथ्वी की जो इसमें इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के ये बनाया गया। फिर उसके बाद यहाँ की अपने गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट ने किस तरीके से काम किया है उसको बताया गया। और फिर उसके बाद कैसे कैसे करके गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ के होम टाउन को किस तरीके से प्लान आउट किया, उन सारी चीज़ों को बताया गया। फिर ऊपर सबसे 6 नंबर में सिमुलेटर, इंडिया का लार्जेस्ट सिमुलेटर जो है, उसमें किस तरीके से भूकंप आया, उसकी तीव्रता क्या थी और उस समय किस तरीके का माहौल हुआ था, उन 3D पिक्चर के ऑडियो वीडियो के साथ में वो चीज़ दिखाया गया। 7वें नंबर गैलरी में जो यहाँ पे 12,932 लोग एक्सपायर हुए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए डिजिटल श्रद्धांजलि बनाई गई है कि सारा म्यूज़ियम देखने के बाद जितने लोग आते हैं वो डिजिटल श्रद्धांजलि करते हैं। फिर उसके बाद मियावाकी फॉरेस्ट जो इतने 470 एकड़ में है, वहाँ पे मियावाकी फॉरेस्ट बनाया गया, उसके अंदर चेक डैम्स बनाए गए। उस चेक डैम्स में सबके नाम लिखे हैं, जो लोग एक्सपायर हुए हैं उनके सबके नाम लिखे गए हैं। Ahead of the Ram Temple consecration ceremony on 22 January, the museum hosted a day-long program. An extempore speech on the Hindu god was conducted in its auditorium, along with a felicitation ceremony for car sevaks who were part of the temple movement. The highlight of the day was a pair who walked from the Milwaukee forest to the museum while dressed as Ram and Sita. Nearly 200 to 250 people burst into spontaneous Garba performances on the premises, chanting Jai Shri Ram.
Interestingly, a newly opened bookstore on the premises is devoid of books on either earthquakes or natural disasters, except for a lone book on earthquakes in Gujarati. However, the shop named Youth Upanishad has a vast collection of bestsellers, religious and health related books, as well as a section on books on the Kutch region in Gujarati. Also, the construction of the museum came with its fair share of controversies. Mahavir Acharya, who runs an NGO Hunarshala Foundation, has seen the changes the region of Kutch and Bhuj in particular has undergone over the years. From your experience, are people of Kutch or Bhuj in general better prepared to deal with disasters or earthquakes now? I think situation is quite improved. If you look before earthquake and after earthquakes, we definitely can see there's a lot of improvement and in systems also. And I can say, and second thing is because the whole mechanism setup, it was quite helpful for the people to follow the earthquake safety norms. So before I think earthquake, there's no authorities who can check your drawings and permission issues, and all are very under the municipality level, where one municipality engineer can approve without looking other parameters, structural parameter. Where instead of that, after earthquake, what happened, because the government has set up the Bhuj Area Development Authority, which is actually so any person has to build a house within the development area of the Bhuj. He or she has to go to that authority and get plan approved. After that, he can start the construction. And during construction, they have to hire a structural engineer also. They have to hire the architects. They have to hire supervisors, and they have to certify that every stage we have checked. So the responsibility also fixed by the people who preparing the plans and design the structural systems also. So because of that, I think there is something coming system where people are being forced to use all the structural elements to be incorporated in the building. So this has happened after earthquake, and especially initially it was too much of phobia of earthquake, and people anyway very scared. They want to build a very, very safe houses. Even like column and beam is like very prominent, like everybody wants to build a column and beams, like multi-story kind of heavy structure also, which is not actually so much required, but even the people are scared, so they are trying to overdone also. But it's good one way, because it becomes practice slowly. So whatever new construction is happening is still happening. I think people are following the rules, especially in the urban area. So you work extensively with the local community. Yeah. When there were discussions going on around building the Smritivan, what were the kind of conversations happening in the local community for the monument, for the museum? Yeah, I think some 1 or 2, I think community gathering we organized for the architects to understand the context to design this thing. And I think Rajiv Katpalia was the architect, and their team was came, and the very elite people, not elite, we can say the more intellectual people or elite people been called to who are the vision for the Bhuj. And they come out with different kind of ideas, because they started, many people saying this state of building, name and monument, because in Indian tradition, people build that once people die, Atma is Amar, it's never died. Only the body finish. Then body no meaning to do puja on the body. We don't believe in Indian Hindu sastras. So then Atma is going to Amar. So that nobody is there. So only the respect. Somebody suggested that only just grow a lot of trees, and somebody suggested that each tree, some trees can be given the name of person who died, and their family can take care of. They can always visit that easily. That kind of system. Somebody says, okay, just make a small trails, don't disturb much ecological formation of the Bhujia hills. But architects have the idea that no, if we make what's called it. It's padias. In Gujarat, it's called padia. Like some martyrs died from. So some stone they place and some carving and some story. In villages you might find many these calls. So they build this kind of
big things now, which is like their monuments of people died, and they put the names, engraved names on the steel. And the idea was that water comes and people can sit there and remember them and go do some prayer also. So idea is noble, and the collection of water is noble because all water percolates. Is all percolation tank. Actually, it's not a tank. It's percolation. It's like water can reside and go downside. Where the downside you can grow the tree, so they can get lot of water. And then tree grows. So good idea was people is given this no touching the hills. But finally, when the construction started, like huge machinery has raised the whole. A lot of, because we believe that time lot of wildlife was there. Because I'm living that nearby that house, there Bhuj, and I show in 2001 the fox coming to wolf and fox coming to my house 10 and 12 to in group and shouting wow wow, and I was just remember those kind of things. But now nobody is there. No, there are many maybe wildlife there because the scraping of the land, they all run away. So this is minus point, but finally they give also people get a beautiful green landscape. So now people enjoy that also. This is Monami Gogoi reporting from Bhuj for The Print.